Իլհամ Ալիևի բռնատիրական վարչակազմը վերստին անցել է պատերազմական գործողությունների։ Դա հայ ժողովրդին հայտարարված պատերազմ է։ Azərbaycan heç bir təhribata əl atmamışdır. Azərbaycan sadəcə olaraq öz maraqlarını müdafiə edir, öz mövqeyini dəstəkləyir və öz siyasətini anlı açıq aparır. Դա հայ ժողովրդին հայտարարված պատերազմ է։ Դա պատերազմ է մեր անկախության, ազատության և արժանապատվության։ Les deux protagonistes prétendent bien tout simplement que c'est l'autre camp qui a commencé. Ce n'est pas la première fois depuis le cessez-le-feu qui avait été conclu en 1994, comme cela avait été rappelé, qu'il y a des tensions armées. Il faut se souvenir qu'en avril 2016, une similaire confrontation avait fait environ une centaine de morts. ildə artıq biz bu əziyyəti çəkirik. İnşallah sağ-salamat hamımız Allahın köməyi ilə gedək, öz torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Մենք էլ հավաքվել ենք, որ մեր օգնությունը, մենք մեր զորակցություն հայտնենք մեր հայոց բանակին։ Pendant très longtemps d'ailleurs, cette région a été rattachée à l'Arménie et c'est Staline dans les années 1920 qui a décidé de rattacher cette région à l'Azerbaïdjan qui était à l'époque une république soviétique à l'intérieur de l'URSS, ce qui n'était pas le cas de l'Arménie. En 1991, à la chute de l'URSS, eh bien, le Haut-Karabakh a déclaré son autonomie, son indépendance même. Il y a eu un conflit qui à l'époque a fait 30 000 morts, un cessez-le-feu en 1994, mais en fait un cessez-le-feu, pas un accord de paix, donc c'est ce qu'on appelle un conflit gelé. Il y a eu depuis des escarmouches. J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont des relations très fortes. Les deux États se décrivent d'ailleurs comme une nation, deux États. Et il y a entre les deux pays une forte coopération économique et militaire. Esas